police stations. Bihar politicians Lalu Prasad Yadav and George Fernandez speaking out in support of Bihari pullers. The 1981 drive was opposed and strongly criticized by different sections of civil society in the city and briefly also by the Congress party. This is for the first time the rickshaw pullers of Calcutta felt that they were losing grounds from beneath their feet. All Bengal Rickshaw Union, which had been formed in 1934, found paralyzed in this question, seemingly on accounts of its being tied to one of the ruling parties. But on the other hand, trade unionist George Fernandez by this time found Calcutta Rickshaw Chalak Panchayat as because a substantial proportion of the city's pullers were from Muzaffarpur in Bihar, which was his constituency at that time. It was only after the matter was taken by the new union to mass meetings of rickshaw pullers in Muhammad Ali Park in central Calcutta, leading to gherav of police stations and the corporation's licensing office, that the 1981 drive died down. This had at least had some effect. The Chief Minister Jyoti Basu went so far as to say in public that the public should not be worried about the loss of services caused by the banning of hand-pull rickshaws. The government is introducing auto rickshaws and they will carry your kiddies to school. हमारा नाम अनवर हुसैन। हमारे पिताजी 1952 में यहाँ कलकत्ता में रिक्शा गैरेज को तैयारी थी। उस टाइम में काफ़ी गरीबी था, गांव में बहुत सारे गरीब लोग थे, तो इसको अपना अभियान चलाए। उनका अपना मन में था कि सबसे आसान चीज़ यही लगा उनको कि कलकत्ता में आए, इधर उधर भटकने के बाद में एक जगह लिए, ये जो अभी गैरेज है, यहाँ पर पहले जंगल था, वो काट करके गैरेज को बनाए और जितने ग्राम से अपने गांव के आसपास में जो कितने पहचान के लोग, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, उसको यहाँ बुला करके और यहाँ जो है मजदूरी करना शुरू किया। कुछ बेहतर हुआ। ये एक मिशन था उनका, अपना मिशन, वो अभी तक चलते हुए आ रहा है। उसके बाद सब चल ही रहा था ठीक ठाक। उसके बाद में हमारे बड़े भाई उस टाइम में बीकॉम किए हुए थे, लेकिन नौकरी नहीं किया। इतना अच्छा बिजनेस था ये, उनके पिताजी बोले नहीं अभी बिजनेस नौकरी करने का नहीं है तो बिजनेस में आ जाओ, ये बिजनेस है, बिजनेस में आए। उस टाइम तक ठीक है। 1996 से गड़बड़ हुआ। 1996 में एक आपका परिवहन मंत्री जो आपको ही थे, वाम फंड के जो आपके नाम भूल रहे हैं, सुभाष चक्रवर्ती ना, सुभाष चक्रवर्ती। उस टाइम में काफ़ी आंदोलन हुआ, रिक्शा को हटा दो, आज से 31 दिसंबर से रिक्शा कलकत्ता में दिखाई नहीं देगा। 1996 में ऐसा उनका जो है पेपर सब में आया था, अनाउंसमेंट किया गया था। बहुत सारे रिक्शा को पकड़ के डंपिंग कर दिया गया था। बहुत जद्दोजहद में उस टाइम में हमारे ऑल बंगाल रिक्शा यूनियन के सदर थे आपका सुमन मित्रा, उनके बहुत जद्दोजहद से रिक्शा सबको रिलीज़ किया गया और फिर जो है रिक्शा चालू हुआ। वहीं से रिक्शा का जो है बिजनेस ड्रॉप। गवर्नमेंट को उस टाइम उसी वक्त से खटका कि इसको हटाना चाहिए। 1996 से स्टार्ट आंदोलन सब हुआ। उस टाइम में आंदोलन में आपके सेंट्रल मंत्री थे अभी जज फर्नांडिस, वो भी आए थे यहाँ पर, आंदोलन में शामिल हुए थे। ममता बनर्जी भी आई थी। आंदोलन हुआ लेकिन इसका कोई रास्ता निकला नहीं, हल नहीं। By the middle of the 90s, two ministers of Jyoti Basu-led Ministry of West Bengal who were most active to ban hand-pull rickshaws were the then Home Minister Buddhadev Bhattacharya and the State Transport Minister late Subhash Chakraborty. Bhattacharya had apparently come around to agree with Mr. Chakraborty that rickshaws must be quickly cleared from the city for the good of the city, and it has been reported that he apparently agreed that the poor must suffer little for the good of the larger community. Proceeding a further step, State Transport Minister Subhash Chakraborty said, from starting January the 1st, if you come to Calcutta, you will see no rickshaws. But Mr. Bhattacharya failed completely at that time to address the question of his government throwing the poorest of toilers out of work and thereby being directly responsible for creating only more misery and more unemployment. In this turmoil, the rickshaw pullers associations
offered to surrender their vehicles at nominal prices, but there were no takers. Significantly, it is noticeable that the rise of auto rickshaw occurred silently in Calcutta by this time. The hand-pulled rickshaw played an important role to this rise. At a time when hand-pulled rickshaws were experiencing a fall, the government completely diverted their attention to another direction than attempting to solve the problem in a smooth and even way. The situation was used by the government to invite Bajaj, the manufacturers of auto rickshaws, to move into the city and displace the small assemblers who made hand-pulled rickshaws. Not only the left-front government, many others sought opportunity in the troublesome situation. Rickshaw pullers, their crisis and their rehabilitation altogether emerged as an issue in the political arena of Bengal. As an example, election manifesto of Congress in 90s. There it was stated that replace hand-pulled rickshaws by driver-owned cycle rickshaws in the first 100 days. It is unknown to many people. However, the government had tried to introduce alternatives to substitute life as a rickshawala. As a rehabilitation measure, it has offered to train them as drivers of auto rickshaws and other vocational activity like carpentry, tailoring, handicraftsmen, parking lot attendants, etc. When it was first decided to ban this form of transport, the government had even tried to lure them with a certain amount of money in exchange for their rickshaws. Many of them rejected it. मैंने 40 साल से चला रहे गाड़ी, हाँ समझे तो ये गाड़ी चला रहे, गाड़ी उड़ जाने का बात है, लेकिन इसके लिए सरकार क्या देगा हम लोग को अभी तक हम लोग को मालूम नहीं हुआ कि जो क्या मिलेगा। अब हम लोग कमाते हैं, कभी 100 रुपये भी कमाते हैं, कभी 50 रुपये भी कमाते, कभी ऐसा ही भी होता है जो नहीं भी होता है। हाँ तो हम लोग क्या करके गुंजाइश करते हैं, हम ही लोग जाने। अब इसको उठा देगा तो हम लोग क्या करेंगे। हम लोग के लिए जो यूनियन जो लड़ रहा तो यूनियन का कुछ तो इसका ये नहीं कर रहा, हल नहीं निकाल रहे। यूनियन क्या कर रहा, हम लोग जो गरीब आदमी जो भूखा मरेगा गाड़ी उठ जाने से तो क्या करके। In October 2006, Kolkata's city government issued a report, Rehabilitation of Rickshaw Pullers, anticipating the passage in the State Assembly of the ban on hand-pulled rickshaws. The report foresees many problems dealing with unemployed pullers, including how to identify them since so many rickshaws were unlicensed. The action plan segment of the report stresses that it has to be firstly decided whether or not to rehabilitate unlicensed rickshaw pullers. Another concern is those who are too old to infirm for further employment. One local NGO group, Calcutta Samaritans, estimated in 2003 that more than 9,000 people could be retrained. In 2007, some proposals were submitted to the then Chief Minister Buddhadev Bhattacharya regarding the rehabilitation of the hand rickshaw pullers. Among these two were attentive. Number one, unable pullers should get money support or old age pension scheme for those who are 60 plus, and secondly, identify 12 zones of the whole Kolkata city and divide equally 6,000 rickshaws to these zones, 500 rickshaws for each zone. These rickshaws are to be identified by different colors and numbers according to zone, as the puller of one zone doesn't enter another zone. But as usual, government did not show minimum interest to these proposals. 15th of August 2005, once again the former Chief Minister Buddhadev Bhattacharya announced his plan to phase out hand-pull rickshaws from the city in around 5 months, giving officials enough time to find other jobs for the 6,000 old licensed rickshaw pullers. He also announced the pullers retrained to run other modes of transport, the Chinese model cycle rickshaw being a possible alternative. What a farce! Nowadays, cycle rickshaw also illegal in Kolkata. सिटी के अंदर में आपको सिर्फ परमिशन है हाथ रिक्शा, टाना रिक्शा जिसको बोलते हैं, सिर्फ टाना रिक्शा, साइकिल रिक्शा बोल करके कुछ नहीं है। कलकत्ता शहर में
साइकिल रिक्शा बोल करके कुछ भी नहीं है। जब ये बात उठा दिए तो ये बोल रहे हैं आप। ये आपका पुलिस डिपार्टमेंट, इसमें साइकिल रिक्शा चलवाने जो अभी चल रही है, आप देखे होंगे कम से कम नहीं भी तो 1000 से ऊपर भी गाड़ी चल रही है इस अंचल में। पार्क सर्कस एरिया, बनिया पोखर एरिया, आपका रूपन स्ट्रीट एरिया, ये आपका सदर स्ट्रीट एरिया, यहाँ तक कि अभी कुछ जो है आपका दलदल्ला चांदनी तक जो है आपकी साइकिल रिक्शा अभी जा रही है, आ रही है अभी। इसका जिम्मेदार कौन है? सिटी में परमिशन नहीं है उसका, गवर्नमेंट को मालूम भी नहीं है ये मेरा साइकिल रिक्शा चले, लेकिन देख रहा है। जितने मिनिस्टर लोग जाते हैं आते हैं, जितना पुलिस का महकमा है, बड़ा बड़ा महकमा है, वो आ रहा है जा रहा है, लेकिन परमिशन नहीं है उसका रुकने का। उसको यहाँ तक कि उसको अंधा हो गया, उसमें आँख भी नहीं है और कान भी नहीं है, दोनों चीज़ नहीं है उसके पास। लेकिन उसी का मिशनरी जो पुलिस महकमा में है, थाना का ओसी, हेकनी ब्रांच का ओसी, आपका लाल बाजार के कुछ ऑफिसर हैं, ये सारे लोग मिल करके उसका पैसा खा रहे हैं। एक रिक्शे पर कम से कम उनका 200 रुपया मिलता है महीने का। अगर 1000 रिक्शा है इस अंचल में तो कितना मिलता होगा? इस अंचल की बात बताइए, इसके बाद में तो और है तपस्या है, क्या क्या ये सब जो है अभी साइकिल रिक्शा चल रहा है, धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन ये इसी अंचल की बात करें जो अब जहाँ परमिशन नहीं है, वो जो उसमें कुछ दलाल भी है, वो पुलिस वाला दलाल को रखा है, 2-4 ठों को दलाल को रखा है पैसा उठाने के लिए। वो एक तो स्टिकर लगाना पड़ता है, उसमें लगाया, वो पुलिस देखा अच्छा स्टिकर लगा हुआ है, वो मेरा पैसा पेमेंट है इसका, ई महीना का छोड़ दिया, ऐसा करके चलवाता है। उसका परमिशन है नहीं, सिर्फ हाथ रिक्शा, टाना रिक्शा जिसको बोलते हैं, उसका ही परमिशन है। On the other way, cycle rickshaw unscientific also. Since the wheel is larger, it puts the platform in a higher position. Another good point would be that the work done or the energy consumed by the person lifting a rickshaw with larger wheels is less. In fact, the even distribution of weight in a hand rickshaw coupled with the unusually large size of the wheels makes the rickshaw pulling relatively a less strenuous occupation, since the wheels develop a momentum of their own. While the cycle rickshaw is often seen to be less strenuous than the hand rickshaw, reports suggest that cycle rickshaw pulling constitutes a greater hazard to health for the puller, and that the incidence of chest disease, muscular strain and impotency is significantly higher among rickshaw cyclists than amongst hand rickshaw pullers. ये सब एक अभी लगता है कि एक ही लकड़ी है, लेकिन लकड़ी अलग अलग लकड़ी है। ये सारा ये जो है पार्ट अलग अलग होगा। ये जो आपका कंपास है, ये सब लकड़ी का नहीं होगा। ये आपका एक तो उसको बोलते हैं कसेली का पेड़, कसेली का दरख्त होता है ना, कसेली सुपारी जो खाते हैं, उसका ये होना चाहिए। रबर के जैसा होता है, ये लम जाएगा, टूटेगा नहीं, सन होता है उसमें काफ़ी। ये जो कंपास है, ये आप देख रहे हैं, ये रिंग देख रहे हैं, रिंग ये शीशम गाछ होता है, शीशम गाछ का रिंग होता है। ये जो आप स्कोप देख रहे हैं, ये आपका इसको बोलते हैं साल काट। ये जो होता है गोल ऐसा, ये शीशम होता है, ये शीशम का वो अलग अलग सब जो है आपका होगा। ये जो देख रहे हैं, ये बॉडी जो बना हुआ है ये लकड़ी का, ये तून का लकड़ी का होता है, तून लकड़ी। ये बोलिएगा एक ही लकड़ी से सब बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो जो जितना रिक्शा बड़ा रिक्शा है देखिएगा, ये जो देख रहे हैं ये बाँस का होता है, ये लकड़ी बाँस का लकड़ी होता है। उसके अलावा इसका जो पीछे दिया हुआ है ठेस देखते हैं, ठेस ये दिया हुआ है। ये यदि हाथ से किसी कारण से छूट गया, पैसेंजर छूट गया, तो ये आपका आके अटक गया। इसके अलावा मान के चलिए कि बड़ा आदमी कोई इसके लंबा आदमी है, ऐसे चलाना है उसको, लंबा आदमी को इसको हल्का करने के लिए, आराम देने के लिए उसका 2 एंगल लगा हुआ है। यहाँ से उसको छोटा बड़ा किया जा सकता है, ऊंचा नीचा, ऐसे ऊंचा जैसे मान के चलिए इसको हम ऐसे छोड़ेंगे, इसको ये देखिए बैलेंस में होगा। ये ऐसा होने से ये बैलेंस होता है, इसका खड़ा हो जाएगा गाड़ी आपका, ये छोड़ने से खड़ा हो जाएगा। Chief Minister Buddhadev Bhattacharya told repeatedly that wherever he went, be it Delhi, Mumbai or abroad, people asked him how long Kolkata will have hand-pulled rickshaws. This is a shame for our city.
we should have done this much earlier. But the most interesting thing is, on 14th of October 2009, former US Ambassador Timothy J. Roemer took a ride on this Kolkata rickshaw. But it didn't help to increase its number in the city. The rickshaws started to be vanishing from the streets of Calcutta. As the subject of inhumanity was a debatable issue, the initiative was taken by the government to abolish rickshaw behind much exercised theory, rickshaw, a slow-moving vehicle. Hand-pulling rickshaws started to be banished from busy areas of Calcutta, including Khidirpur Road, Red Road, Park Street, Chaurangi. Calvin Trilling, in his writing Last Days of the Rickshaws, published in National Geographic, has presented a vivid account of the utility of hand-driven rickshaws to our society. It is the people in the lanes who mostly regularly used rickshaws. They are people who tend to travel short distances, though lanes that are sometimes inaccessible to even the most daring taxi drivers. People in the lanes use rickshaws as a 24-hour ambulance service. From June to September, Kolkata can get torrential rains. Entire neighborhoods couldn't be reached by motorized vehicles, and the rickshaws being pulled through water that was up to the pullers' waists. Still today, there are areas in North Kolkata and even Central Kolkata with narrow alleys where it is only a hand rickshaw which can accommodate. The steadiest customers are school children. Even it is noticed that during 1 month summer vacation in schools, most of the pullers go to their hometown, Bihar or Jharkhand. Middle-class families contract with a puller to take a child to school and pick him up.